में बहुत जरूरी होता है सैंपल और मॉडल पेपर को करना, सो हर साल की तरह इस बार भी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2 tan inverse x, the number of solutions. Sin inverse x is defined in this zone. Okay, tan inverse is defined for all real values, so -1 to +1. Okay, so if we substitute an angle theta equal to tan inverse x, so x equal to tan theta, so sin inverse tan theta is nothing but sine of, so here it is like 2 theta only. Okay, this is the first part. Now the thing is that whenever the tan inverse x and sin inverse x appear, replaced by the trigonometric expression. So here x equal to tan theta removes the inverse trigonometric function. So tan theta sine of 2 theta. So sine 2 theta, we know 2 sin theta cos theta. So tan theta equal to 2 sin theta cos theta. Two sin theta cos theta means sine by cos is this. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड अगर cos से करेंगे, so sin theta equal to 2 sin theta cos square theta. So sin theta will be equal to 1 minus 2 cos square theta equal to 0. So यहाँ case 1 is sin theta equal to 0, theta equal to 0. So x equal to tan 0, so x equal to also 0. Next 1 minus 2 cos square theta equal to 0, cos square theta is half, cos theta is plus minus, so theta equal to plus minus pi by 4. So x equal to क्या है tan theta, so that is plus minus 1. So डोमेन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास डोमेन क्या है, we must verify check the domain. रेस्ट्रिक्टेड रेंज के हिसाब से अगर जाएंगे, so रेंज ऑफ साइन इनवर्स x क्या है, ये है इसका रेंज। तो अगर x इक्वल टू 1 में इसे हम लोग चेक करेंगे तो साइन इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, सो दिस लाइक सिंपली पाई बाई 2, सो 2 tan इनवर्स 1 भी आ जाएगा, 2 into पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 2, दैट वर्क्स। x इक्वल टू -1 के हिसाब से देखेंगे तो साइन इनवर्स -1 minus pi by 2, so 2 tan inverse minus pi by 2, this also works, ठीक है। और x equal to 0 के हिसाब से भी अगर देखेंगे, so sin inverse 1 is 0, 2 tan inverse 0 in this case will be 0, so this will also work. So finally we get 3 values, okay, x equal to -1, 0 and 1. Okay, so total 3. So final answer to the question, how many solution is 3 मूर्ति. So that's the final solution. Next video में कुछ और मजेदार करेंगे.